Hello friends, I am Dr. Nisha, Assistant Professor in Biotechnology Department at Khandwala College of Management and Sciences. Today I am discussing about immunity. So what is immunity? The term immunity refers to the resistance exhibited by the host towards infection caused by microorganisms and their products like toxins. The state of protection from infectious disease is called immunity. मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है लाइक बैक्टीरिया वायरस, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है. तो वो जो स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो कहलाती है हमारी इम्यूनिटी. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन. That means immunity is carried out by the process of recognition and disposal of non-self or materials that enter the body. Immune response is the reaction of the body against any foreign antigen. And immunity. There are two types of immunity. फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है. इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इट इज कम्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप. एंड इन्नेट इम्यूनिटी इज द बेसिक रेजिस्टेंस टू डिजीज that an individual has from the time of its birth. जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जैसे कि हमारे जो जैसे टाइम ऑफ बर्थ, जब हमारा जब न्यू बॉर्न बेबी का जब जन्म होता है तो वो क्या करती है एट द टाइम ये इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होती है और उसको हम कहते हैं हम दीज मैकेनिज्म प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन of host defense and eliminate most of the microorganisms encountered by a healthy individual. And it act as जैसे कि मैंने बताया first line of defense against infection. The various non-specific defensive barriers are present. First is anatomical and physical barrier. Second is physiological and chemical barriers. Third is biological barriers, and fourth is general barriers. Anatomic barriers. The barriers prevent the entry of pathogens to resist infection. Like these examples हैं इसके skin, mucous membrane, coughing and sneezing, etc. And in anatomic barrier, antibodies include skin and surface of mucous membrane. This is a picture of skin. The outermost layer of skin consists of dead cells and filled with a water proofing protein called keratin, and the sebaceous gland associated with hair follicles and secrete an oily substances called sebum, and which maintain skin pH between 3 and 5. जो हमारा सीबम होता है वो क्या करता है, हमारी जो स्किन की पीएच है उसको मेंटेन करता है 3 and 5, जो क्या करता है हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. And similarly, a variety of non-specific defense mechanisms prevent the entry of most microorganisms through mucous membrane. And आपने देख रहे हैं जो डायग्राम, ये म्यूकस membrane का है. और coughing and sneezing, the mechanical actions may help in driving out the foreign particles that enter the digestive and respiratory. Next is physiological and chemical barriers. Human milk, this is very rich in antibacterial substances. एग्जाम्पल हैं IgA, लैक्टोफेरेटिन, न्यूरामाइनिक एसिड एक्सेट्रा. दे फाइट अगेंस्ट इकोलाई एंड स्टेफाइलोकोकाई. फिजियोलॉजिकल और chemical barriers, this type of barriers include temperature, pH, oxygen tensions and various soluble factors like lysozymes, interferons and complement systems. Biological and phagocytic barrier. These include mononuclear phagocytic system, which was originally called reticuloendothelial system. And biological barriers include endocytosis.
these barriers operate by internalizing macromolecules. अगर हम internalize करें macromolecules को तो that is known endocytosis, and particulate material and cells को phagocytosis. The material ingested by endocytosis, and virtually all cells are capable of endocytosis. The material ingested by endocytosis and phagocytosis are divided into lysozymes, where they are digested by degradative enzymes like proteases, nucleases, lipases, and other hydrolytic enzymes. This is a picture of endocytosis. Here you can see जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया वो किस तरह से हमारे उसमें एंटर कर रहा है, और उसकी प्रोसेस फेगोसोम्स बनते हैं, लाइसोसोम्स है, और अपने क्लास MSc इसमें बाइंड कर रहा है, एंड देन रिलीज़ हो रहा है. General barriers, it is also known as inflammatory response, and जैसे एज है, the very young and very old are most susceptible for infection. एक्चुअली जो यंग एज में होता है वो भी और जो ओल्ड स्टेज है. फीटस इज प्रोटेक्टेड बाय प्लेसेंटल बैरियर, क्योंकि जो हमारे न्यूबॉर्न है, जो प्लेसेंटल जो हमारे ह्यूमन प्लेसेंटा हमारी IgG मैंने बताया पहले इम्यूनोलॉजी में बताया है इस चीज़ को अपने लेक्चर में पहले, कि जो इम्यूनोलॉजी हमारे में IgG हमारा एंटीबॉडी होता है वो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है. तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं. At old stage, people have reduced or lost the host defense, and it consists of a complex series of events induced by tissue and damage caused by bond or pathogen invasions. And next is acquired adaptive immunity. It is of two types: active immunity and passive immunity. The individual's own immune system is the cause of the immunity, and in passive immunity, immunity is transferred from another person or an animals. एंड जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो फर्दर दो में डिवाइड की गई है, मैंने आगे भी इसको मेंशन किया है. एक्टिव इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. And in natural immunity, antigens are introduced through natural exposure, and artificial में क्या होता है, antigens are deliberated introduced in a vaccines form में. Passive immunity is also divided into two parts: natural and artificial. Natural immunity, antibodies from the mother are transferred to her child across the placenta or in male. मीन्स जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है IgG, वो एक तो प्लेसेंटा के थ्रू और इन मिल्क में जो ट्रांसफर्ड होते हैं बाय बर्थ. एंड इन आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय अनदर पर्सन और एन एनिमल आर इंजेक्टेड. एक्टिव इम्यूनिटी, it is the protection of immunity against particular organism after exposure, and it is of two types: natural active immunity and artificial active immunity. This immunity natural active immunity in which this immunity develops by natural processes like infections. Example है इसका, the infection like smallpox are cured by the active function of the immune system. And an artificial active immunity, here instead of natural infection is created artificially by using various types of vaccines like polio vaccine, cholera vaccines, etc. It's an artificial active immunity. Action of lymphocytes and antigen presenting cells. Lymphocytes, they possesses antigen binding cell surface receptors, and in antigen presenting cell they have class 2 MSC. MSC means major histocompatibility molecule on their surface, and they present antigen to lymphocytes. This response is of two types: humoral immune response and cell mediated immune response. And passive immunity, in passive immunity, acquiring of the antibodies passively from an immunized donor to an
to a non-immunized recipient is known as passive immunity, and it is of two types: natural passive immunity and artificial passive immunity. In natural passive immunity, it occurs when antibodies are transferred from the donor to the recipient in a natural manner. मीन्स हमें उसे वो नहीं करना है ट्रांसफ़र अपने आप से, वो नेचुरल मैनर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स मदर टू हर चाइल्ड, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, IgG एंटीबॉडी। In artificial passive immunity, the transfer antibodies and sensitized lymphocyte from immunized donor to the non-immunized recipient artificially। अगर हम किसी को आर्टिफिशियली डोनर कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है। एंड एग्जांपल है जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द हॉर्स सीरम, एंड हम उसको GMOs मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें, मतलब किसी से हम डोनर से ट्रांसफ़र करना दूसरे में, वो हमारा आर्टिफिशियली मैनर में कहलाता है। And thank you for listening me.